Good morning student, welcome to GYANJYOTI online classes. Student, now we are going to discuss question answer chapter 7 weather and climate. Okay, so student, first before we are going to discuss about question answer, let's I am asking some questions, oral questions. So let's start. What is humidity? Okay, so student, what is humidity? So you can say the amount of moisture or water vapor present in the air is called humidity. Okay, so student, again I repeat, what is humidity? The amount of moisture or water vapor present in the air is called humidity. Next question, second oral question. What are three heat zones? Okay, so student, these temperature zone are the tropical zone, temperature zone, tropical zone, temperature zone, and freeze zone. Okay, so student, three zone, that first tropical zone or the torrid zone, or another is temperate zone, and third is freeze zone. Okay, temperate zone or freeze zone. Okay, next objective type questions. Now we come objective type question. First, pick the correct option. Okay. So student, first question, the climate of Russia and Canada remains, you have given option A moderate, B cold, and C hot. So student, you have to write B cold. Okay, number one, the climate of Russia and Canada remains cold. Okay. Number two, the height of a place above sea level is called its. ओके स्टूडेंट, देखो जो सी लेवल से हाइट रहते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड. ये उसको एल्टीट्यूड, द हाइट ऑफ ए प्लेस अबव सी लेवल इज कॉल्ड इट्स एल्टीट्यूड. So student, you have to pick this answer. Okay, so student, next number 3, the polar regions experience very dex climate. Okay, polar region जो कि अर्थ के ऊपर सरफेस और लोअर सरफेस, लोअर पार्ट और ऊपर पार्ट में पोलर रीजन है. ठीक, व्हाट इज द क्लाइमेट ऑफ पोलर रीजन? मींस the polar regions express very dex climate, cold climate. Okay, so you have to pick the option that given or cold. Okay, next number 4, the winds which carry moisture cause option A storm, B rainfall, or C hurricane. Okay, so student, the correct answer is rainfall. Okay, number 4, the earth is divided into dash temperature zone. Okay, so student, the earth divided into 3 temperature zone. Okay,
So student, next now we come fill in the blank. Okay, so first question, the condition of the atmosphere over a short period of time at a particular place is called its tax. Okay student, again I repeat again, the condition of the atmosphere over a short period of time at a particular place is called its weather. Number B, fill in the blank. Okay, fill in the blank. Number 1, weather. Okay, number 2, the climate. That's determine the climate of a place. Okay, the climatic that's determine the climate of a place. So climatic factors. Okay, so student, जो क्लाइमेट है उसमें हम क्लाइमेटिक फैक्टर होने से ही हमें पता चलता है कि क्लाइमेट उनका जो एरिया है वो इस टाइप का है. सो स्टूडेंट यू हैव टू राइट फैक्टर. नेक्स्ट नंबर 3, the places near the equator receive more tax. इक्वेटर जो मिडिल लाइन है, ठीक है, इक्वेटर क्या रिसीव करता है? हीट, बिकॉज द सन रे ऑलवेज टुवर्ड्स द इक्वेटर लाइन और फॉल्स ऑन इक्वेटर लाइन. ठीक है, वो इक्वेटर लाइन पे ही आता है कौन सा? हीट. सो स्टूडेंट नंबर 4, the place located at higher altitudes have dex climate. ठीक है, हायर अल्टीट्यूड जो होते हैं उसका क्लाइमेट कैसे होता है? कोल्ड. ठीक है, डिफरेंट सिटी पता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द डिफरेंट सिटी अल्टीट्यूड सिटीज, मनाली और शिमला. So student, number 4, cold climate. Okay. Number 3, land gets heat decks and cools down decks. Okay. So student, number 3, land gets heat at day and cool down at night. Okay, so at day or at night. Student, this is your fill in the blanks or pick the correct option. Okay, now we come true false. Student, now we come number C, write T for true and F for false. Okay, against statement. Against each statement. Okay, student, so in here number 1 question, the weather of a place keeps on changing from टाइम टू टाइम. ओके, सो वेदर जो होते हैं वो क्या होते हैं? टाइम टू टाइम चेंज होते हैं. ठीक है, सो नंबर 1 ट्रू.
Number two, all regions of the world have same type of climate. सभी वर्ल्ड के जितने भी जगह है वो सभी का क्लाइमेट सेम होता है क्या? नहीं, इक्वेटर लाइन में होगा तो हीट होगा, और जो पोलर रीजन है, ठीक है, जो टॉर्रिड जोन है वो अलग होता है, टेम्परेट जोन अलग होता है. ओके, सो स्टूडेंट नंबर टू फॉल्स, सभी का अलग अलग. नंबर थ्री, द अर्थ इज divided into two parts by the equator. Okay, so the earth is divided into two parts by the equator. Yes. Okay, students, okay, student number 4, humid climate causes rainfall. Yes, जो वेपर प्रेजेंट होता है एयर में और उसी ह्यूमिडिटी बढ़ता है, ठीक है, और भी रेनफॉल में कन्वर्ट करता है. ओके, सो स्टूडेंट नंबर 5, द फ्रीज जोन रिमेन्स हॉट थ्रू आउट द ईयर. फ्रीज जोन जो होते हैं वो हॉट रहते हैं पूरे से, नहीं, ये कोल्ड रहता है. ठीक है, सो स्टूडेंट नंबर 5 फॉल्स. ओके स्टूडेंट, now we come the humid match the following. Number D, number D, match the following. Okay, number 1, humidity. 2, the torrid zone. Number 3, the freeze zone. Number 4, altitude. And number 3, the temperate zone. Okay, students, in here very cold climate, very cold climate. Okay, number 2, number 1, very cold climate. Okay, number 2, ice. Number 3, moderate climate. Number 4, moisture. Number 6, hot and wet climate. Okay, so student, first number we can see humidity. Okay, so humidity always moisture. Okay, water vapor also always contain that forms humidity. Okay, and next number 2, the torrid zone. Okay, the torrid zone, hot and wet climate. Hot and wet climate. Next, the freeze zone. The freeze zone, very cold climate. Okay. Next
altitude, height, and last one the temperate zone, moderate climate. Okay. So student, this is your the following questions we have already done. Next, now we come number E, subjective type question. Okay, student, now we come the subjective type question. Okay, number E. Answer the following question. First, number 1. How are climate and weather different from each other? Okay, so student, how the climate or weather different from each other? So student, first we can write weather. Okay, and weather, climate. So what is weather? The condition of the atmosphere over a short period of time at a particular place. Okay, at a particular place, it's called its weather. Okay, student, similarly we can write climate, the average weather condition of a particular place for a long period. Of time is called climate of that place. Okay. Next, another point we have a different place of the world has different climate. Another point, a different place says different places of the climate different places of the
world have different climates. Okay, so student, this is your first question. Okay, what is the difference between weather or climate, or the how are climate and weather different from each other? Okay, next question: which factors affected the climate of places? Okay, number 2, which factors affected the climate of places? Okay, so the temperature of different place. Number 2, the temperature of different place different places is not same. Okay. It varies from place to place due to the climatic factor. Okay, student, another point we have, we can these factors are distance from equator altitude distance from the sea. Humidity, and direction of wind. Okay, friend, this is your second question, or this is the answer. So, which factors affect the climate of places? Okay, so the temperature of different places is not same. It varies from place to place due to the climatic factors, or the climatic factors. These factors are distance from equator, okay, and altitude, distance from the sea, humidity, and direction of winds. Okay, so this is your second question or answer. Okay, now we come number 3. Number 3, why do the places near the equator have hot and wet climate? Okay, so number 3,
answer. This zone gets the direct rays of the sun all the year. So all the region that fall in this zone have a hot and wet type of climate. What type of tropical climate? Okay, students. So this is your number 3rd question. Why do the places near the equator have hot and wet climate? Okay, so student, you can write this zone gets the direct rays of the sun all the year. Okay, so all the regions that fall in this zone have a lot and hot and wet type of tropical climate. Okay, तो इसी सोन रे जो डायरेक्ट इक्वेटर पे आते हैं, ठीक है, और इसी जोन में जो है वेट और हॉट होते हैं, ये इक्वेटर जोन है, ठीक है, और ये हॉट रहता है, ठीक है, बिकॉज the sun that ray direct fall on the equator line. Okay, next number 4. Okay, how does the direction of winds affect the climate of place? Okay, number 4. Number 4. How does the direction of winds affect the climate of a place? Okay. So first point, number 4. Winds are also the major cause of the climate of places. Another point, winds blowing from all regions make a place cool.
reasons make a place hot? What reason make a place hot? Okay, next, wind coming from the desert are hot and dry. Next point, winds blowing from the sea to land carry moisture and make the climate in the coastal areas humid. Okay, these wind cause rainfall in many regions. These winds cause rainfall in many regions. So, student, this is your fourth question answer. Winds are also the major cause of the climate of place. Another point, देखो winds जो होते हैं वो मेजर कॉज क्लाइमेट में उसका इफेक्ट दिखाते हैं. Winds blowing from cold region make a place cool. ठीक है, कोल्ड रीजन में जो winds होता है वो वहाँ का जो प्लेस है, जगह है, उसको कूल रखता है. Winds blowing from hot regions make a place hot. जहाँ पे हॉट विंड आएगा वहाँ पे हॉट जो प्लेस है, जो जगह है वो हॉट होगा. एंड विंड्स कमिंग फ्रॉम डिजर्ट आर हॉट एंड ड्राई. जो विंड्स डिजर्ट एरिया से आएगा वो हमेशा ड्राई एंड हॉट होगा. ठीक है, विंड्स ब्लोइंग फ्रॉम दी सी टू लैंड कैरी मॉइस्चर. जो विंड सी से लैंड आएगा वो क्या होते हैं? मॉइस्चर. उसमें वेपर और जो वेपर प्रेजेंट ह्यूमिड के होते हैं. ओके, एंड मेक द क्लाइमेट इन द कोस्टल एरियाज ह्यूमिड. ठीक है, कोस्टल एरिया में जो उसके ह्यूमिड होगा. ठीक है, एंड दिस विंड्स कॉज रेनफॉल इन मेनी रीजन. ओके, सो स्टूडेंट, नाउ वी कम नंबर 5. ओके, नंबर 5, on what basis is the earth divided into temperature zones? Name them. Okay, so student, number 3, you can write the earth is divided into 3 temperature zones. The earth is divided into 3 temperature zones. Three temperature zones or heat zones.
on the basis of the distance from the equator. On the basis of the distance from the equator. नंबर 3, कौन से बेसिस में जो टेम्परेचर जोन है वो डिवाइड हुआ है. ओके, सो स्टूडेंट कितने पार्ट में डिवाइड हुए हैं? दी अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 टेम्परेचर जोन. ठीक है, 3 टेम्परेचर जोन में डिवाइड हुए हैं. और हीट जोन, जो हीट जोन है ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. ओके. Okay, student, now we come number 6. Short note on the free zones. Okay. Okay, student, now come number 6. Write a short note on the free zone. Okay, so student, free zone में उसके short notes लिखना है. So this zone is lies between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere, between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere. Okay, देखो स्टूडेंट, ये जो है इक्वेटर है, ठीक है, और नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और ये जो है एक जोन है, ये फ्रीज जोन है. ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जोन जो है फ्रीज जोन. ठीक है, तो इसी जोन के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है. ठीक है, सो स्टूडेंट, दे आर कॉल्ड द नॉर्थ फ्रीज जोन. ठीक है, जो ऊपर का है, ऊपर पार्ट का है, वो नॉर्थ फ्रीज जोन एंड साउथ फ्रीज जोन रेस्पेक्टिवली. जो साउथ एरिया में है, ठीक है, इसी पार्ट में ये साउथ फ्रीज जोन. ओके, एंड दिस जोन रिसीव वेरी स्लैंटिंग रेज ऑफ द सनलाइट. ठीक है, इक्वेटर में सबसे ज्यादा सनलाइट आता है. ठीक है, और ये जो पार्ट्स है ये दोनों कोल्ड रीजन है. ठीक है, और यहाँ सनलाइट ज्यादा मिलता है. ठीक है, सो this zone receive very slanting rays of sun, so the climate of this zone is very cold. तो यहाँ का जो जोन है, ये जोन का क्लाइमेट जो है बहुत कोल्ड होती है, और ये जोन जो होती है ये ज्यादा हीट जोन होती है. ओके, सो स्टूडेंट, अगेन आई रिपीट, दिस जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल एंड द नॉर्थ पोल इन द northern hemisphere, between the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere, and they are called the northern freeze zone and southern freeze zone respectively. Okay, as this zone receives very slanting rays of sunlight, so the climate of this zone is very cold. Okay, so student, this is your chapter 7 exercise. Okay, that complete. Next we will do next chapter. Okay, thank you, have a nice day.